Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English grade 9 and welcome to Chase Academy. Dear learners, today we are supposed to do our lecture number 5 क्योंकि कल हमने lecture 6 किया था. And this is also related to reading and critical thinking. ये हमारा grade 8 का SLO है. इस chapter के अंदर lecture 5 two SLOs are there. Reading comprehension. Today we are supposed to see that how we can read, view and analyze. कितने keywords हैं? Read, view and analyze. A variety of reading grade appropriate and high interest books and text from print and non-print sources. Let's talk about poetry. क्योंकि इस chapter में हमने ये SLO select किया है, it is full of poetry, free verse, narrative and rhythmic poems. These are the three types. Basically, I've explained them over and again that poetry is of so many different types, so many different kinds in terms of their message and also in terms of their structure and their form. And this SLO is again this part, the second SLO is make recommendations and develop an interest in fiction and poetry. Now this is very comprehensive. Either I would recommend you to read certain poetry or certain fictional texts, or you should be able to do that by yourself. Exchange recommendations with one another. ठीक है, इससे क्या होगा? रीडरशिप आपकी बढ़ जाएगी, रीडिंग आपकी बढ़ेगी तो कोई भी अनसीन अननोन पैसेज या प्रोज या पोइट्री सामने आएगा तो आप उसको टैकल कर सकेंगे टेक्निकली. सो इसलिए this SLO is very generic, that you make recommendations and develop an interest in fiction and poetry. Initially you might not be that much interested in poetry and fiction, but as you read it gradually you will take interest and you will replace and switch your other forms of entertainment with book reading, because book reading is very much important if you want to learn English or any other language. जितना आप पढ़ेंगे, consume करेंगे, उसके ग्रामर को, उसके different situations को, vocabulary increase होगी, ultimately you will have a good grip on the English language and you will start thinking in the English language. And then you don't have to translate everything. जब से अभी हम क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं, एक जुमला सोचते हैं उर्दू में अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, क्योंकि हमें टाइम लगता है उसे जो ट्रांसफर करने में, उसे ट्रांसलेट करने में. जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको लैंग्वेज पे ग्रिप होगी. सो ये एसएलओ स्पेसिफिकली आपके इंटरेस्ट के लिए. मेन एसएलओ हमारा आज का यही है, पोइट्री से रिलेटेड. लास्ट लेक्चर में भी, लेक्चर 6 में भी हमने पोइट्री को एनालाइज किया था और आपको एक टास्क दिया था. आफ्टर learning about the main poem, I told you to solve or analyze certain poem with figurative language, rhyme, poetic devices, etc. I hope you have done it and solved the worksheet. This is the vertical linkage of grade 8. Same SLO, right? Same SLO. ये उसकी continuity है in your grade 9. Now when we are talking about reading, yes, we see there are a lot of different collected poems, poetry collection books, poetry books या collections, poetry collections, बहुत सारे, Wordsworth, Keats, W.B. Yeats. हमने कल Yeats की poem को पढ़ा था. So इन सब either इन poets ने अपने collections को publish किया हुआ है या आपको दूसरों के जो effort है उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं कि आप उनकी poetry के collections को buy करें और पढ़ें. इसी तरह see, all these different kinds of poetry books are there, and this is these are the covers of the most famous fictional novels, fictional books, ye sari. So as a 9th grader you must get a chance, you must buy these books, get the PDFs and read them at least. All right, so that's how we develop our interest in fictional text and in poetry. So look, the covers are so cool. So if you ask me, I've read this one, I've read this one, Book Thief, Catcher in the Rye. So all of these are very interesting books with good characters, good knowledge. उसके अंदर message है,
एक बहुत बहुत अच्छे थीम्स अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं. Alright, whenever we are analyzing a poem, we need to think about certain things. We need to look for the theme, the main idea, the message. Multiple themes भी हो सकती हैं. We need to work on the language. हमें language को analyze करना है, किस तरह की language इस्तेमाल हुई है. Figurative language है तो उसमें symbols, imagery, figures of speech, poetic devices, ये सारे किस तरह use हुए हैं. We will talk about language. And then we will talk about sound and rhythm. कि क्या रेपिटेशन है साउंड्स की, एलिट्रेशन है, ऑल ऑफ दीज पोइटिक टेक्निक जो साउंड टेक्निक्स हैं, ठीक है, लिटरेरी टेक्निक्स जो साउंड से रिलेटेड हैं, उसमें वो कितनी इस्तेमाल हुई है. रिदम, रिदम इज रिलेटेड टू राइम स्कीम. पोइट्री, उसमें रिदम है या नहीं है, किस तरह का रिदम है, क्या राइमिंग स्कीम है, क्या पैटर्न है, हम ये एनालाइज करते हैं हर पोम के लिए. वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, हाउ द पोम इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वर्सेस एंड स्टैंजास. So what is the format? All right, so what is the structure of the poem, and then the context कि किस हवाले से बात हो रही है, क्या context है पूरी बात का. Why is the author, the poet, actually writing this poem? Why did he write it? What does he want to say to you? So the whole context, पूरा scenario, हम जैसे हमने कल वाले लेक्चर में the poem that we discussed was the Lake Isle of इंस फ्री, उसका हमने कॉन्टेक्स्ट देखा था, उस पर हमने तफसील से डिस्कशन की थी, आइडियाज भी लिए थे आपसे. सो आप कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे. सो वेन एवर यू आर आस्क्ड टू टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोम, देयर इट इज. ये सारी चीजें पोम के एनालिसिस में आती हैं, पोम को एनालाइज करते हैं, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन आता है जी एनालाइज दिस पोम, पोम दी हुई है, एनालाइज दिस पोम, ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे. लेकिन अगर सेपरेट क्वेश्चंस हैं लाइक टॉक अबाउट द थीम, talk about the speaker, what is the point of view, what are the figures of speech used in the poem, talk about the structure, form, what is the tone and mood of the poetry, is it sad, depressing, lonely, pessimistic, or is it optimistic, happy, joyful and very entertaining and hopeful. किस तरह की टोन है पोम की, आपको क्या फील हुआ पढ़ के, ठीक है. तो ये सारे इस तरह के, और ये सारे जो हैं वो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस हैं, हॉट्स. दे आर नॉट लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. इट मींस यू हैव टू पुट एफर्ट इन आंसरिंग देम. और इस तरह भी हो सकता है कि पोम दी है और नीचे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है थीम का, स्ट्रक्चर का, उससे आपसे पूछा जा रहा है कि दो एग्जांपल्स दें पर्सोनिफिकेशन की, व्हाट इज द इमेजरी. सो ये सारी चीजें एनालिसिस में आएंगी. Today we have a poem called I wandered lonely as a cloud, जिसे most famously it's also called Daffodils. Alright? Daffodils भी नाम है इसका, लेकिन क्योंकि एक रिवायत ये भी थी कि पहली वर्स को ही एज टाइटल ले लिया जाता था, जैसे पहली वर्स है उसी को टाइटल कंसिडर किया जाता था. अगर पोएट अपना टाइटल पोम नहीं दे रहा, बाज़ औक़ात पोएट्स जो होते हैं वो अपने पोम को टाइटल नहीं देते, तो उनकी पहली लाइन ही उनका टाइटल तस्वुर किया जाता है. क्लियर है मोहम्मद? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम, और यहाँ पे एट द एक्सट्रीम राइट यू कैन सी द राइमिंग स्कीम इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. ऑलराइट, सो I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. अब जैसे हम इसे पढ़ते जा रहे हैं हमने देखा, let's talk about the figurative language. I wandered lonely as a cloud. क्या है ये? सिमिली है ना? अपने आप को क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहा है with the word as, not metaphor but simile, because he's not directly saying that but comparing. That floats on high over vales and hills. अब ये भी, this is also simile. No, actually, okay, this is part of that. That floats on high over vales and hills. कि मैं आवारा फिरता रहा, wandered, खुले बगैर किसी फिक्र के, as a cloud. क्यों उसने क्लाउड के साथ अपने आप को तशबीह दी, क्यों ये सिमिली यूज की, आपको क्या लगता है मोहम्मद? क्योंकि क्लाउड भी अकेले ऐसे अपनी अपनी मौज में अकेला क्लाउड अगर आप देखें वो फिर रहा है, खुली जगह है, इज वॉन्डरिंग. सो ही सेड I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd. क्या आपको इसमें एक नैरेटिव नजर आ रहा है?
एक स्टोरी नजर आ रही कि मैं जा रहा था, फिर मैंने यूं देखा, फिर ये हुआ, एक ऑर्डर है, एक नैरेटिव है. सो दिस इज अ नैरेटिव पोम, बट इट इज ऑल्सो अ रिदमिक पोम एज वेल. दिस इज नॉट फ्री वर्स पोइट्री. फ्री वर्स पोइट्री की आगे हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. All right. Cloud hai, then crowd, hills, daffodils, A B ऐसे ही है. Then trees and breeze, कोई भी मैच नहीं कर रहा तो हमने उसे C कह दिया. सो वो कहता है कि मैं ऐसे ही जा रहा था. आई वॉज वॉन्डरिंग लोनली एज अ क्लाउड. सडनली आई सॉ समथिंग. आई सॉ अ क्राउड ऑफ डैफोडिल्स. और वो देख के इतना एक्साइटेड हुआ. ही वॉज डम्बफाउंडेड बाय लुकिंग एट दोज डैफोडिल्स. ही ही रोट अ पोइट्री. देखें सिंपल क्यों लिखी है उसने ये पोम. ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. किस बारे में है कि वो एक दफा जा रहा था, डैफोडिल्स उसने देखी, उसे बहुत अच्छे लगे, उसे उसके अंदर से एक एक्सप्रेशन निकला, उसने पोइट्री में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरह जब हम रोजमर्रा जिंदगी में कुछ देखते हैं तो हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट पोर्ट्स इन द पोम्स यू सी एक्सप्रेशन. कि देखते तो हम भी हैं इतनी चीजें, तो हमें भी ये आना चाहिए, हमें भी फॉर्म ऑफ ये लिटरेचर ये आना चाहिए कि हम किसी तरह अपने आप को भी इस तरह एक्सप्रेस कर सकें. वेल, all right. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Again, ये क्या है? Personification है ना, कि वो नाच रहे थे. Personification. This is personification. Look. So he's saying that अच्छा सेटिंग की बात करें. सेटिंग क्या है? आप सेटिंग को तस्वर करें. डैफोडिल्स है, इट्स अ एरिया क्लोज टू नेचर, आउटसाइड, आउटडोर्स की बात कर रहा है वो. ठीक है, सेटिंग आपके ज़हन में आ रही है. बिसाइड द लेक, ओके, यू कैन थिंक अबाउट इट. बीनीथ द ट्रीज, लेक के साथ साथ दरख्त के नीचे, दरख्तों के नीचे डैफोडिल्स वहां पे थे और वो हवा से लहरा रहे थे. दे वर डांसिंग. ऑलराइट. सो ये हमारे ज़हन में इमेजरी भी आ रही है. अगर आपसे इमेजरी पूछा जाए तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ऐसे लग रहा था जैसे सितारे चमक रहे हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. मिल्की वे क्या है? हमारी गैलेक्सी है ना, जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं. तो वो इस तरह लग रहा था जैसे दे आर, इट्स पार्ट ऑफ द मिल्की वे. इट इज ऑलराइट. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. अब वो एक लाइन से लगे हुए हैं. All of them are moving here and there, to and fro, like जैसे कोई stretch कर रहा है अपनी body को. They are stretching like that along the margin of a bay. This is also part of the setting, the bay of the area. 10,000 saw I at a glance. उसने देखा कि 10,000. Now this is maybe hyperbole, क्योंकि ना तो उसने काउंट किए. 10,000 नहीं होंगे, मे बी 100 हो, बट उसको ऐसे लगा दैट, या उसको इतनी खुशी है इसको बताने की कि उसने क्या पोएटिक डिवाइस यूज की? हाइपरबोली. ऑलराइट. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली. और फिर फौरन बाद पर्सोनिफिकेशन आ जाता है. तो जैसे ही हम पोम को पढ़ते हैं, एक दफा पढ़ते हैं, 2-3 दफा, तो हमें बहुत सारी जो है पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच का अंदाजा हो जाता है. ऑलराइट. देन अगेन यू कैन सी, फिर शाइन, way, line, bay, glance and dance. D-E-D-E. This is the rhyme scheme over here. All right. Next stanza. The waves beside them danced. फिर क्या आ गया? Personification. But they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. So this means happy, very happy. And now you can see personification भी है, and choice of words देखें आप. choice of words they are very precise, to the point. किस तरह की language है? Very happy, optimistic, joyful, wondrous. I gazed and gazed, but little thought what wealth the shoe to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that
inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Again personification आ गई. इसी तरह बहुत सारी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं. And he is cherishing every moment. He said, when I'm laying on my couch, I think about it. I think about that images and I feel happy and joyful. So why do you think these are some comprehension questions that are followed by poems as usually they are? Why do you think the poet uses an image of a cloud to describe his loneliness? Because clouds are also wandering here and there lonely in solitude, some of them. So that's why he compared himself with a cloud. Cloud to free है ना बिल्कुल. He's no worries, no tensions. So he said, मैं भी इसी तरह जा रहा था. मैं भी इसी तरह लहराता हुआ आवारागर्दी करता ऐसे. I was wandering, and then I just like a cloud. So that's how you answer this. How did the poet feel in the company of daffodils? Do you think he felt sad? No. Did he feel sad? He felt amazed. He felt dumb. He was dumbfounded. So he felt like very, joyful. What figures of speech are used? We saw some examples of personification, simile. अगर आप टाइटल को देखें उसमें भी simile है. I wandered lonely as a cloud. And you can see an example of hyperbole as well. उसमें metaphors भी हैं. इस तरह आप find कर सकते हैं. Now, a quick overview of metaphor versus simile. Though we know the difference, but here to revise it, if I say I felt like a fish out of water when I went skating for the first time. I felt like a fish out of water when I went skating for the first time. Like, yes? He said I felt like. He's not calling himself fish. So that's simile. If I say, I was a fish out of water when I went skating for the first time. Now he's directly calling himself fish, which means it's also a comparison, but direct comparison. Hence, it's called a metaphor. All right. Here's the summary of the poem. In the poem, I wandered lonely as a cloud. The poet is out walking in the countryside when he suddenly comes across a profusion of flowers. They were daffodils, right? Their beauty overwhelms him. He was overwhelmed by the beauty. Okay? He compares the daffodils to the Milky Way and waves in the bay, but finds the daffodils more stunning. He said the daffodils were more stunning. They were stunning than the stars and the Milky Way. All right. So ये भी एक hyperbole. इसमें भी hyperbole है, exaggeration है. All right. अच्छा, जब भी आप summary लिखेंगे poem की, जब उसमें paraphrase करेंगे, you have to mention the name of the poem, the title and the poet. All right. All right. Theme क्या है इसमें? Theme of nature, memory and spirituality as always. So Wordsworth की poem में इसी तरह होता है, spirituality, nature, peace and memory. अब देखें past में बात हो रही है और इसका point of view क्या है? जी अमन बताएगी. What is the point of view of the poem? Narration style, point of view. जी क्या है point of view? I wandered lonely as a cloud. थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है क्या? सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन किस तरह है मोहम्मद? सेकंड पर्सन में क्या होता है? कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? यू यूज होता है ना? फर्स्ट पर्सन आई, मी, माइन, माई सेल्फ. सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा. So यहाँ पे क्या है? I wandered lonely as a cloud. I saw this, I saw that. So the point of view is first person. And who's the speaker? William Wordsworth. Poet ही उसका speaker है, first person में हमारे साथ बात कर रहा है और ये एक memory की बात कर रहा है. I wandered. Past है ना? Verb की कौन सी form है ये? Past form है. तो ये past की बात कर रहा है. He is recalling. वो memory से बात कर रहा है. ठीक है? So let's talk about symbolism. The main symbol is cloud.
क्लाउड किस चीज का सिंबल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल रेड इज सिंबल फॉर, इज अ साइन फॉर डेंजर, ऑलराइट। अगर कहीं पे स्कल बना हो इस तरह, स्कल यानी खोपड़ी बनी हो, डेंजर का साइन है, ऑलराइट। फायर है तो डेंजर है। क्लाउड से आपको क्या जेन में क्या इमेज आता है? आई वुड लाइक टू नो। नबीहा, I would like to know that what comes in your mind when you think about clouds? क्या आपके जहन में आता है? टेंशन फ्री, फ्रीली मूविंग, आजाद, बिल्कुल ठीक है। तो उसका वो सिंबल है। So the poem begins with a symbolic reference to the cloud, and because it is wandering and lonely, so he compared himself with that. Point of view पे हमने बात की, this is the first person. अब ये एक poem है। अब इसमें देखें कोई rhythmic pattern कुछ भी नहीं है by William Carlos Williams. This is called, this is just to say, I have eaten the plums that were in the ice box and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. So this is a free verse poem. फ्री पोइट्री है, फ्री वर्स पोइट्री है। इसी तरह ये पोम है, इसमें भी एक नैरेटिव है और रिदम है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें, दीज आर द फर्दर रीडिंग रिकमेंडेशंस, द पोइट्री दैट यू कैन रीड, एंड you will get the resources. This is all about today's lecture, students. Now you are supposed to read the poems, A Poison Tree or different further reading poems, and then analyze them. Talk about theme, structure, form, point of view, rhythm, etc. Thank you so much for paying attention. I'll see you in the next video lesson. Till then, take care of yourselves and Allah Hafiz.